Good morning, everyone, and welcome to Morning Conference. First, we'll start with technical derivatives outlook. If we see on yesterday's trading session, index opened with a strong gap of 120 odd points, but the good thing was that the index was able to maintain that gap up and it traded in a very sideways, and no fresh buying or fresh movement was seen post that. So if you see the hurdles are now playing at 18700 odd levels, and index made a high near of 18642. So as soon as we clear 18700 levels, because technically and derivatives both the writing and resistance is placed over in those zones. So if we clear those levels, then we could move to the fresh high of 18887. So now coming to the sectoral front, if we see then cement, the capital goods, metals and finance stocks rallied, where the auto insurance, infrastructure, oil and gas saw some sudden pressure in the index. So on the daily chart, if you see that the broader range of 18500 has given a weekly range breakout, so we could be testing sooner or later at the fresh highs. So for now, coming to the supports and resistance, if you see this immediate support for the index is placed at 18200, but resistance could be seen at immediate at 18700 and post at 19,000 odd levels. So the bias for the day remains bullish, and we continue to buy the index. Secondly, on the Bank Nifty front, Bank Nifty also managed to break out the range of 44,000. It made a high close to 44,500, which was acting as a technical resistance and the derivative resistance too. So on the stock specific effect, the ICICI was trading in red, while the AU Bank, SBI Bank, and IndusInd Bank outperformed. So if you're seeing Bank Nifty is now slowly moving, making life highs levels day by day. So we guess that any dip towards 43,500 should be used an opportunity to add long. 43,500 should be held as a support. While on the higher side, 44,500 as an immediate hurdle, and close at 45,000 could be the ideal range for the index for this week and for this week. Now coming to the Nifty futures, why built up? If you see, there was a long build up in the index with a one odd percentage point, and the PCR also saw it downtick to close at 1.33 from 1.37. So major high additions in the call front were seen at 18.7 and 18.800, while the strikes and on the put front 18.6 and 18.500. So 18.500 to 18.700 could be an ideal range for the index. And from similarly in the Bank Nifty, if you see Bank Nifty PCR also dipped from 1.18 to 1.1. While as in the futures, when you see there was a long build up seen in the index by the tune of 0.43%. And in the options fund, if you see then 43,300 to 44,500 could be are the put writers on that level, whereas 44,500 and 44,700 are the call writers. So if you see 44,500, there are additions on that, so we can see that today this level could be tested back once again. Now coming to the FIS charts, and if you see FIS are marginally short in their position by 2273 contracts. So now they are net long with 29,636 contracts. And the long short ratio stands at 60.21, but in the cash segment, they were again buyers. They bought to a tune of 1,758 crores, while DIs bought to a tune of 853 crores. The long build-ups were seen in Astral, Lupin, and Apple Housing Finance, while a short build-ups were seen in CUB Bank, GMR Infra, and Bosch Limited. The stock could be kept on radar today are Tata Steel, MHRL, TVS Motors, Hero MotoCorp. This stock should be kept on radar. Now coming to the SGX is showing a flat opening of 14 odd points, so we'll see post at what it comes. That's it from an hand over to Devang side for more updates. Hi, good morning all. So couple of fundamental news from my end. So IRCTC reported its numbers. So revenue growth was up 40% YOY. This growth was mainly led by tourism and catering revenues. And, because of it being driven by tourism and catering, which has a 12% kind of margins, the revenue EBITDA margin was down by around 670 BPS. So going forward also, we believe that as the catering and tourism revenues come back to growth, the margins will continue to decelerate. In terms of YOY growth in EBITDA and PAT, it was 16% and 17% and 16% respectively. We currently, in the long run, we believe that, company's revenue and profitability will improve over a period of time. And, the con call is at 12 o'clock. So post that, we'll come out with the results. Our previous rating on the stock was buy. In terms of Wipro is seeing many exits. The recent two are SVP level exit. So one is an SVP of head of healthcare and medical devices, and other is the head of manufacturing devices, manufacturing high tech and business unit. So he was handling around $1 billion business unit. This does not bode well for Wipro. And similar senior level exits also happened in the previous CEO's team.
and which impacted their revenue and growth and profitability. Hence, this overall does not bode well for the company. In terms of HCL Tech has filed a case against Atos, which is a French IT company, for copyright infringement on two of its 8 products, which were bought from IBM. HCL is seeking $132 million in damages. Uh, this, if the company can win, and if they get the damages, it bodes well for the company. In terms of Jamna Auto, so Jamna Auto reported weak set of numbers. The revenue for the quarter stood at 6 billion, flat 1% YOY and 7% QOQ. EBITDA margin for the quarter stood at 11.1%, which is a contraction of 134 bps. So overall, dismal set of revenues and profitability. Given the growth business outlook on account of strong CV demand due to uptick in economic activities like mining, logistics, construction sectors, and softening of commodity prices, we believe that the revenue and PAT CAGR going forward will be healthy at 8% and 11%. We maintain our hold rating on the stock, and we have a target price of around 115. In terms of Ahluwalia contract, PAT came in line with our estimate. The surprise element was EBITDA margin, which stood at 13% in quarter. Ahluwalia was guiding for improvement in margins, but reported number in which higher and is up 410 bps QOQ and 310 QOQ. So it bodes well. Overall profitability improvement is good. It has also guided for revenue increase of 20% and EBITDA margin increase of 30 to 40 bps. Hence, we maintain our buy rating on the stock. And the key catalyst for the stock performance is EBITDA margin improvement and order win. In terms of NCC, NCC also reported a healthy set of numbers. It was beat on R and consensus estimates by 7% and 13%. This is led by better execution, which increased by 28% YOY. Even we have upgraded our EPS by 5% and 6% FY24 and 25, and the target price also has been revised upwards to 154 at 10x PE from 146, and we are retaining a buy on the stock. In terms of Rolex, so Rolex Rings exhibited a soft performance in Q4 FY23. Both revenue and EBITDA were below our estimates. However, PAT came in above our estimates. Gross margins dipped by 180 bps owing to lower benefits of operating leverage and input price. We expect that going forward, sales and net profit will be healthy given the traction in bearing rings and automotive component segment. Hence, we maintain a buy rating on the stock with a target price of 2,500. So we are positive on Rolex. NCC, Ahluwalia. In terms of ICICI Bank, ICICI Bank has approved raising of its stake in ICICI Lombard Insurance by 4% in multiple transactions. The bank currently owns 48.2% in general insurance arm. ICICI Bank plans to acquire 2.5% more. Overall, we believe this is a positive for ICICI Bank and the group as a whole as it continues, and we continue to have a buy rating on the stock. In terms of KNR Construction, KNR reported numbers and PAT was better than our estimates and is based on better execution, but margins were weak. In terms of revenue, increased by 16%, and it was better than its guidance of 30 to 35%. Cash flow is weak and OCF was also weak. PBT of 7 billion, and this is led by higher receivables and lower payables. So we will update on the stock post the conference call at 3:30 p.m. today. In terms of Everest Kanto, the results were above our estimates. Revenue fell by 37.8% YOY to 2979 million due to lower sales volumes. EBITDA margin also contracted by 293 bps, which was mainly due to lower top line growth. The noteworthy thing is that the recovery of EBITDA was around 1000 bps. We will review our estimates and rating post the interaction with management. Currently, we have a hold rating on the stock. That's it from my end. Over to you, Kshitija. Thank you, sir.
Good morning, everyone. Few updates from my side. ONGC Chairman Arun Kumar Singh said that oil and gas producer will invest up to rupees 1 trillion by 2030 on energy transition goals as a part of its target to go carbon neutral by 2038. So, company also plan to raise electricity generation from renewable sources to 10 gigawatt by the end of the decade. Next update on Viacom 18, the own streaming services Geo Cinema has inked multi-year content deal with NBCU Universal to bolster its premium content library. As a part of this partnership, Geo Cinema will get access of thousands uh, of hours of NBCU films and TV series to India. Next update on MOIL, Manganese Iron Ore Company reported a record production of around 4 lakh 2,000 tons of manganese ore in the fourth quarter of the previous financial year 23, which is up 7%. Then next update on Ratan India Enterprises Limited double its cargo drone capacity to 40 kg with the launch of L40. Company now has a total 3 models and 4 variants in the L series, built for defense, e-commerce, healthcare, and paramilitary and police. Next update on Inox Wind. Inox Wind bags repeat order of 150 megawatt from NTPC Renewable Energy Limited. So basically, this bag 150 megawatt trunke wind power project order to be executed in Gujarat. So that's it from my end. I will hand over to Prabhakar sir for further updates. Thank you and over to you, sir. Good morning, team. There are many stocks which are doing very good. Vector Food has been an outperformer for this month. And many times we have said that instead of buying QSR companies where they are not increasing their revenue or profit margin is very bleak, and this company is supplying to this QSR, which is making better profit and they are expanding. So Better Food, any dip will be a buy. PSP project, NCC, Ahluwalia contract, HG Infra. These are few construction stock which are doing good with just 1 year more for election. I think these companies will get more orders. So these are companies to be watch out for. Life insurance is coming back. So SBI Life, HDFC Life, ICICI Pru, there are good buying seen in these stocks. Even in bank, IndusInd Bank, Axis Bank and ICICI Bank is seeing very good buying. Mahindra Life, now there was a gap up and the stock has started to perform. So, DLF also is one more stock where very good buying is seen. SBI Cards is one more stock which is slowly outperforming the market. We expect the stock to reach 1,100 very soon. NBCC came with the results. So FY23 revenue was higher by 21.45% at 6,736 crore. Profit after tax, 231 crores, which was higher by 26%. But the stock is already very expensive for a PSU company. Execution is a problem. They have 10x order book, but still, I have been tracking this stock for a very long time. Execution has been a very big problem. ITC has commented, it is there in Business Line today, headline news. Demerger of hotel business is back on table, is what ITC chairman, Mr. Sanjay Puri, told BS reporters. So if demerger is on cards, then it is very positive for ITC. We remain positive on ITC because their cigarette business, which contributes more than 50% of their revenue, and has 50% EBITDA margin, that business is growing at 14 to 15%. So till that business grows and the demerger can be an add-on. So I think this stock will still give 10 to 15% return in the next 6 to 8 months. So ITC is our top pick in that space. In a very interesting news, China C919, China's first domestically manufactured large passenger jet, has successfully completed its maiden commercial flight. State TV showed, it was between Shanghai and Beijing. So it was on early Sunday. So the commercial flight, so it gives a competition to
Boeing and Airbus. So this is something very different, but to watch out for. Torrent Power came with a wonderful results. So Torrent Power revenue was higher by 80% at 25,694 crores. Profit after tax 2,164 crores. That was also very high. EPS for the full year is 44 rupees. Quarterly results, the revenue was higher by 61% at 6,038 crores. But if you see it sequentially, not a big growth. Profit after tax was a turnaround, 488 crores. Previous year it was a loss. Natco Pharma also came with the results. So Natco Pharma revenue was higher by 39.4% at 2,700 crores for the full year. Profit after tax was 718 crores, which was 3.27 times higher, and EPS is 39 rupees 18 paisa. Very good results from Natco Pharma. Pharma is coming back. Yesterday we talked about Sun Pharma. So normally after 1-2 days of the results, after the con call, the stock can start to perform. So we feel Sun Pharma, Natco Pharma, some upside is possible. Inox Wind and Suzlon can benefit. Government waives interstate transmission charges on offshore wind power. Extend commissioning date of green hydrogen and ammonia project extension till 2030. Something positive for this sector. Even TPL Time Technoplast came with the results. So yearly results, revenue was higher by 18% at 4,289 crores, and profit after tax was higher by 16% at 223 crores. The full year EPS was 9 rupees 69 paisa. The stock trades attractively at 89 rupees, but we don't track the stock, so I won't attach too much importance. But valuation wise, it is attractive. So there can be some up move, but you have to be very careful in these kind of stock, because all of a sudden they reverse their uptrend. So with that, over to you, team. गुड मॉर्निंग अभी एक कॉल का हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं। तो कल जिस हिसाब से हमने बात किया था कि क्यूएसआर के चलते क्यूएसआर के कंपैरिजन में जो बाकी की जो कंपनी है लाइक वेक्टर फूड वगैरह जो हमें काफी अच्छे लगते हैं, ये जब भी आपको करेक्शंस देखने को मिलते हैं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो वेक्टर फूड पे हमें काफी पॉजिटिव व्यू है। अगला जो काफी सारे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे पीएसपी है, आलू वाले एचएल इंफ्रा है, तो ये कंपनीज पे भी हमारे काफी पॉजिटिव है। अगले नेक्स्ट ईयर में इलेक्शंस है, इलेक्शंस के चलते हुए ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में काफी कुछ तेजी देखने को मिल सकती है, तो हम पॉजिटिव व्यू लेके चलेंगे। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी फिर से मोमेंटम देखने को मिला है। एसबीआई लाइव, एचडीएफसी लाइव, एचडीएफसी प्रू, ये कंपनीज में बाइंग देखने फिर से वॉलेटिलिटी और थोड़े से मोमेंटम देखने को मिला, तो हमें लगता है कि इन कंपनीज पे वॉच रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी वापस फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक काफी पॉजिटिवली ट्रेड हो रहा है, तो इस पे भी हमारा बाइंग व्यू रहेगा। महिंद्रा लाइफ में एक गैप अप देखने को मिला था, करेक्शंस में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकते हैं। डीएलएफ पे भी पॉजिटिव व्यू है। एसबीआई कार्ड स्लोली मूव कर रहा है, 1100 के करीब जाने की काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो हमारे पॉजिटिव व्यू रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चले तो बायस पॉजिटिव है मार्केट पे। एनबीसीसी के नंबर्स हैं FY23 के 21.45% से ऊपर था, जो कि 6,736 करोड़ के आसपास है। पैट 23%, पैट 231 करोड़ के करीब पॉजिटिव रहा है। तो और इनके जो ऑर्डर बुक्स है वो 10x के करीब ऑर्डर बुक्स है, तो इसमें ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है, बट देन स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगला एक अपडेट आईटीसी के ऊपर है। आईटीसी पे डीमर्जर बिजनेस लाइन में हमने ये न्यूज पढ़ा है कि होटल, उनके जो होटल बिजनेसेस है उस होटल बिजनेस का शायद डीमर्जर हो सकते हैं, ये उनके संजय पुरी ने ये बताया है।
तो अगर ये होता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा आईटीसी के लिए, कि आईटीसी के मेजर कंट्रीब्यूशन सिगरेट बिजनेस से आता है जो 14 to 15% कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें लगता है कि ये अगर डीमर्जर का न्यूज होता है, अगर होटल बिजनेस उसका आईटीसी से सेपरेट होता है, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव न्यूज रहेगा आईटीसी के लिए। हमें लगता है अगला 6-8 महीने में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म कर सकता है। जब भी इसमें करेक्शंस मिलते हैं आईटीसी में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, हमारे व्यू पॉजिटिव रहेगा काउंटर के ऊपर। इसके बाद एक चाइना में हमने ये देखा कि उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट लॉन्च किया, C919 पैसेंजर ये फ्लाइट है। तो ये इससे ये पता चलता है कि ये शायद हो सकता है आने वाले दिनों में ये बोइंग और एयरबस के लिए कंपटीशन हो सकता है। तो ये हमें, हाँ, वॉच लिस्ट ध्यान में रखना चाहिए। अगला एक अपडेट टोरेंट पावर के ऊपर है। रेवेन्यू में बढ़त देखी गई 81%, 25,690 करोड़ के आसपास। पैट 2,164 करोड़ के आसपास देखने को मिला। ईपीएस 44 रुपीज है। क्वार्टरली रेवेन्यू 61% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। पैट में 488 करोड़ के पास ग्रोथ देखने को मिला। जो प्रीवियसली लॉस था उसमें से प्रॉफिट देखो, तो ये एक पावर स्टॉक के करीब ये हमें ध्यान रखना चाहिए। पॉजिटिव न्यूज बन सकता है इसमें। इसके बाद हमने कल बताया था कि फार्मा स्टॉक्स में फिर से थोड़ी सी तेजी और थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। नेटको फार्मा कल हमने सन फार्मा के बारे में बात किया था। हमें लगता है कि नेटको फार्मा के भी जो नंबर्स आए थे पैट में 718 करोड़ के आसपास थे, जो 3.27 टाइम्स हायर थे। ईपीएस भी 39.8 पर 18 पैसा है। तो दोनों के रिजल्ट्स काफी नेटवर्क के रिजल्ट्स हमें ठीक लगते हैं। इसमें हमें लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा तेजी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल फार्मा स्पेस में सिलेक्टेड स्टॉक्स है अभी फिलहाल तो सनफार्मा और नेटवर्क के नाम है जो हमें लगता है कि पॉजिटिव होगा। इसके अलावा आइनॉक्स विंड और सुजलॉन पे जो विंडफॉल टैक्स के वे ऑफ की बात चले तो ये स्टॉक्स में भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो जो कि एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। टाइम टेक्नो प्लस के नंबर्स आए थे। रेवेन्यू 18% से अप टू पैट 16% से अप टू 223 करोड़। उनका जो ईपीएस है 9.69 ₹9.69 है। वैल्यूएशन वाइज ये ठीक है। तो वैसे तो ये स्टॉक ज्यादा वोलेटिलिटी होता है इसमें, उतने हम वॉच लिस्ट में नहीं है, बट लेकिन वॉल्यूशन के नजरिए से देखें तो ये हमें लगता है कि ये पॉजिटिव व्यू बन सकता है। इसके बाद आईआरसीटीसी के नंबर्स आए। आईआरसीटीसी के नंबर्स आए थे उसमें 38% का सिक्वेंशियल राइज देखने को मिला था। तो इनके जो हाँ, जबकि देखा गया है कि जो पार्शियली रेवेन्यू जो डिक्लाइन हुआ 2 to 7% डिक्लाइन इंटरनेट टिकटिंग में देखने को मिला था। बट उनके जो बाकी के जो सेगमेंट्स है, जो कैटरिंग के जो बिजनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 12.1% के करीब है। तो ओवरऑल हमारे काउंटर के ऊपर बाय रेटिंग है। तो प्रीवियसली हमारे बाय रेटिंग थे, तो ये बाकी के मैनेजमेंट के कॉल के बाद फिर इसमें हम लोग रिव्यू करेंगे। विप्रो के ऊपर एक अपडेट था कि विप्रो में काफी सारे हायर अथॉरिटीज के लेवल्स पे एग्जिट्स देखने को मिले हैं। तो रिसेंटली 2 एग्जिट्स हुए हैं एसवीपी लेवल पे, और एक हुआ है हेल्थ हेल्थ केयर और मेडिकल डिवाइस और एसवीपी। एक सेकेंड, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस फॉर अमेरिकन, ये सेगमेंट में हुआ है। तो ये जो एग्जिट्स होने के कारण इसमें उनको काफी सारे हमने देखा गया था कि विप्रो के लिए एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है कि इनके जिसके चलते उनके रेवेन्यूज पे थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काफी सारा इफेक्ट इसमें प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर इसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला था, जो कि ये नेगेटिव न्यूज रहेगा विप्रो के ऊपर। तो ये हमें लगता है कि हमें कॉशियस व्यू लेके चलना है विप्रो के ऊपर। अगला एक अपडेट एचसीएल टेक के ऊपर है। एचसीएल टेक ने एक केस फाइल किया एथोस के ऊपर, जो एक फ्रेंच आईटी कंपनी है, कॉपीराइट के चलते हुए है किया हुआ है। उन्होंने ये एचसीएल ने $132.4 मिलियन का डैमेजेस के लिए बात किया है, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी
IBM से ये कुछ प्रोडक्ट्स जो खरीदे थे जिनके चलते फिर इन्होंने ये जाना कि ये जो फ्रेंच आईटी कंपनी है वो उनके प्रोडक्ट्स यूज करे, तो उन्होंने डैमेजेस के लिए क्लेम किया है। हमें लगता है कि अगर ये डैमेजेस अगर उनको मिलता है तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज रहेगा एचसीएल टेक के लिए। उसके बाद एक नंबर्स आए थे जमुना ऑटो के ऊपर जो न्यूट्रल है, तो वीक सेट ऑफ नंबर्स थे। रेवेन्यू में हमने फ्लैट ग्रोथ देखा था, सिर्फ 1% ईयर ऑन ईयर था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% का ग्रोथ देखने को मिला था। तो ओवरऑल इसके जो नंबर्स थे इतने ज्यादा नहीं अच्छे आए। हमारा जो वी इसमें हम होल्ड रेटिंग मेंटेन करेंगे। रिवर्स टारगेट प्राइस रहेगा 115 के टारगेट प्राइस से। आलू वाले के नंबर्स आए थे, तो जो नंबर्स आए थे वो इनलाइन हमारे एस्टिमेट से थे। तो 13% से क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिला था। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है FY23 में करीब करीब 5% से 5% के करीब से, जो कि 10 to 15% इंक्रीज हुआ है। तो हमें लगता है कि ये काफी अच्छा है ये स्टॉक। तो हमारा जो अर्लियर टारगेट प्राइस था 650 को, जो हमने रिवाइज कर दिया 697 के, तो इसमें हमारा पॉजिटिव व्यू रहेगा काउंटर के ऊपर। रोलेक्स के ऊपर एक अपडेट है। रोलेक्स के भी नंबर्स देखने को आए थे, सॉफ्ट परफॉर्मेंस देखने को मिले। रेवेन्यू और एबिटा थोड़ा एस्टिमेट्स के नीचे आए थे, बट देन पैट में के नंबर्स आए थे वो में बढ़ोतरी देखने को मिली। जो हमारे एस्टिमेट थे 464 मिलियन के पास। तो इसमें हमारा बाय रेटिंग है। टारगेट प्राइस है 2500 के करीब है। तो जो 25x FY25 के अर्निंग एक्सपेक्टेड अर्निंग के हिसाब से हमने बनाया है, तो 2500 के रेटिंग के हिसाब से हम इसको बाय लेके चलते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉल। थैंक यू।